Hello students, welcome to Physics by GSB. Students, now we discuss about electric field due to a infinitely long charged wire using Gauss theorem. Okay students, पहले हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? पहले भी हम ऐसा एक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने यही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था और इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर के लिए कैलकुलेट किया था, लेकिन हमने गॉस थ्योरम यूज नहीं करी थी। वहां पे क्या लिखा था हमने? विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम एंड या फिर क्या लिखा था? यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। ओके, बट नाउ वी डिस्कस अबाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। Okay, so first of all consider a thin infinitely long straight wire having uniform linear charged डेंसिटी, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा और यूनिट क्या है उसके? कूलम्ब मीटर इनवर्स। ओके, तो ड्रॉ करते हैं उसको। ये लीजिए, हमारे पास क्या है? एक थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, इसके ऊपर पॉजिटिव में चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट हाउ वी कैलकुलेट the electric flux using that particular Gaussian surface. Okay, now first of all we consider that the electric field due to a straight wire, a long straight wire, is same at every point having equidistance from that particular wire. ठीक है, मींस जो कोई भी आप इक्विडिस्टेंस मान लीजिए, एक पॉइंट आपने यहाँ पे कंसीडर किया, उसकी डिस्टेंस और यहाँ पे यार भी दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? दोनों पॉइंट के ऊपर सेम आएगी। ओके, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? सेम आएगा। ओके, नाउ वी क्रिएट नाउ कैलकुलेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेट मी कंसीडर ए पॉइंट P पॉइंट है, यहां पर कोई भी P पॉइंट है जहां पे मैंने क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो वी कंसीडर पॉइंट P हैविंग डिस्टेंस r फ्रॉम द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। Next, we draw a Gaussian surface having radius r, cylindrical Gaussian surface with respect to given point. Okay, this is also r. ठीक है, having central axis as a line charge. Okay, this is our Gaussian surface with respect to given y. Okay. This is a Gaussian surface. Okay, हमारे पास वायर गिवन थी पहले, और ये हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया जहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर की वजह से क्या आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे अभी हम। ठीक है, तो मेरे पास कितने कंसीडर, आपको देखिए यहाँ पर Gaussian surface, मैंने सिलेंड्रिकल Gaussian surface लिया है इस वायर के लिए पर्टिकुलर। ठीक है, एक सिलेंडर बना दिया इस तरह से। हमारे पास कितने एरिया दिखे आपको? मेरी सबसे पहले मैं आपको कहता हूं एक कर्व्ड है, जैसे मार्कर है, एक सिलेंड्रिकल टाइप है। ठीक है, तो ये इसका जो कर्व्ड है इसको S1 नाम दूंगा, और इस साइड जो एरिया है उसको S2, और इस साइड जो एरिया बनेगा उसको S2 हम क्या लेंगे? नाम देंगे। यहां पे लिखिए S1 इज द एरिया फॉर कर्व्ड सरफेस एंड S2 एंड S3 रिप्रेजेंट द एरिया फॉर फ्लैट सरफेस। ठीक है, S2 and S3 represent the area of a flat surface. Now we know for a positive charge, चाहे हमारे पास वायर हो चाहे हमारे पास पॉजिटिव से चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से आएगा? इसके लिए रेडियली आउटवर्ड इस तरह से शो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर वायर के लिए। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ये शो हो रहा है नीचे और बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से। ओके, एक ना तो लेफ्ट साइड जाएगा और ना ही राइट साइड, इस तरह क्या इलेक्ट्रिक फील्ड शो नहीं होगा। इनफाइनाइट वायर कंसीडर किया हमने, ये फाइनाइट नहीं है, ये बहुत बड़ी वायर है, लेकिन जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं इस पॉइंट के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं? वहां पे क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, नाउ वी हैविंग थ्री एरियाज S1, S2 एंड S3। नाउ पूरी कंप्लीट सरफेस एरिया को हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो हम क्या करें? स्मॉल एरिया एलिमेंट, कोई मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या है? स्मॉल एरिया एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर किया है। ठीक है, ये रहा स्मॉल एरिया एलिमेंट, और जिसका नाम है DS। ओके, और DS वेक्टर रिप्रेजेंट दी एरिया वेक्टर। ओके,
जो ये रिप्रेजेंट मैंने शो किया है ये क्या है, एरिया वेक्टर शो कर रहा है किसके लिए, जो मैंने स्मॉल एरिया यहाँ पे क्या किया लेफ्ट किया है। और एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो रेडियली आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी साइड यहाँ पे शो कर रहा हूँ वो क्या है, उसी के ही क्या है पैरेलल है। ओके, और जहां पे आप पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करेंगे उसके लिए भी क्या है इसी साइड है। मींस S1 जो सरफेस आपके लिए उसके लिए जो एरिया लिमिट आपने सिलेक्ट किया है ds and electric field having same direction, but in case of two flat surfaces S2 and S3 we also consider a small area element ds इसको 1 नाम देंगे और इसको क्या है ds2, its area vector is towards right side, so its area vector is towards right side. Okay, but electric field is now again is perpendicular to the wire. Okay, directly outward perpendicular here electric field. What is the angle between second surface and area vector of second surface and electric field is 90 degree, angle is 90 degree है, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड सरफेस यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं वो कोई भी स्मॉल एरिया एलिमेंट सिमिलरली टू S2 there is also ds3 vector and electric field is perpendicular, ठीक है ना, angle between is 90 degree. Okay, now we calculate flux passing through cylinder, ठीक है। as you know flux, electric flux is equal to number of electric field lines passing through a particular area is known as electric flux. Now electric flux passing through the complete cylinder is given as, कैसे राइट करेंगे, फ्लक्स phi e is equal to first S1 को कंसीडर करते हैं हम, ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रल जस्ट एज वी प्रूव दैट S1 इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट विद ds1, ओके, प्लस क्लोज इंटीग्रल S2 for second flat surface, first जैसे S1 S2 flat surface is electric field dot product ds2. Next is third S3, again we write closed line integral S3 electric field dot product with ds3. Now we eliminate the dot product, so we having a factor cos theta, जैसे ही dot product को हटाएंगे हमारे पास क्या आ जाएगा cos theta, राइट करते हैं इसको S1 e into ds1 cos theta, theta कितना दोनों के बीच में, they are both are in parallel, ठीक है, so theta is 0 degree. Next is plus closed line integral S2 e into ds2 cos the angle between electric field and flat S2 area vector is 90 degree. So we write 90 degree plus closed line integral S3 e into ds3 cos the angle between area vector and electric field for third surface is 90 degree. So we write 90 degree. Okay, so हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, अभी हम इनको कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। the value of cos 0 is 1. Okay, so 90 degree S1 e into ds1 cos theta का 1 हो गया, रिप्रेजेंट करें, प्लस cos 90 is 0, तो whole term is 0, again cos 90 is 0, so we have value 0. Okay, so flux is equal to closed line integral e into ds1. हमारे पास ओनली क्या बचा, कर्व्ड सरफेस एरिया बचा है, वी हैविंग ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया, सो वी राइट इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड E into the area of curved surface area is 2 pi rl for a cylinder, 2 pi rl, l is the length of given cylinder, l is the length of given cylinder, so we write 2 pi rl is the surface area of a curved surface area of a given cylinder. Okay, so that is the flux passing through a given cylinder from
having Gaussian surface is this is the Gaussian surface with respect to a given infinitely long wire. Now we apply Gauss theorem. Okay, result is there. I will that particular fraction. Okay. Result like above, phi is equal to E into 2 pi r. Result is phi is equal to E into 2 pi r L. Okay. Now, according to Gauss theorem, according to Gauss theorem, Gauss theorem क्या information provide करता है कि flux is equal to Q enclosed by epsilon naught. But in this case, we having a linear charge density which is represented as lambda and which is given as Q by line. Length is line charge density means charge by length. Length is L, so we can write there L. So Q is equal to lambda into L. So charge enclosed is lambda into L. So put there E is equal to lambda into L by epsilon naught. Okay, by epsilon naught. And we know phi is equal to, from equation first, phi की वैल्यू पुट करेंगे ऊपर से, put the value of phi E into 2 pi r L is equal to lambda L by epsilon naught. L is cancelled out with L, so we having E is equal to lambda by 2 pi epsilon naught r. This is the electric field due to a infinite long charged wire using Gauss theorem. Okay, the vector representation is E is equal to lambda by 2 pi epsilon naught r into n cap. Okay, n cap shows the direction of, n cap लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, n cap shows the direction of electric field or with respect to area element. Means n cap is normal to the given charged wire. Okay, electric field की normal नहीं, normal to the given charged wire. Wire की क्या होगा, perpendicular होगा. Okay, जो charged wire आपने consider किया है. This equation represent that electric field at a point due to a wire is inversely proportional to the distance from the wire. ठीक है, मींस जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी वायर की वजह से अगर कोई पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हो तो जितना पॉइंट दूर होता जाएगा वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगी, इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज रेसिप्रोकल. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड and there is distance r, so the reciprocal relation is okay, this will present the reciprocal relation of electric field with respect to distance r for a given wire. Okay friends, तो अभी हमने डिस्कस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग चार्ज्ड वायर या फिर इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर यूजिंग गॉस थ्योरम. आई होप आपको समझ आया होगा. ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. ओके फ्रेंड्स, thank you.